silent or switch off, we'll be able to have a better interaction. And one more promise I want from you: listen carefully, because the experts which we have today are so much knowledgeable. You can get any solution of your any problem for your growth, and over and above research and other things, they are masters of many, for particularly MSME. It is very, I feel myself so much proud. It is very difficult to have all these people together on the dais. So, first of all, to start with a big round of applause to our speakers. Thanks, uh, Shri Manoj Kumar Vatsar, dear Tejas Mehta, Professor Dr. Itinder Pal Singh, Prashant Bhai Gandhi, my dear friend, and Tarachand Bhai. Shortly, we'll be having the Executive Director of AMA with us, Mr. Unmesh Dikshit. My entrepreneur friends, ladies and gentlemen, it's my immense pleasure to welcome each one of you to this 13th growth series, SME growth series, seeing such a diverse people and entrepreneurs over here, academicians here, government representative, and industry experts under in the past 12 editions SME growth series. Of the growth series have exploded a wide range of themes like branding, finance, digital transformation, government policy, lean manufacturing, export, family business, women entrepreneurship, and skill development, etc. I'm sure many of you might have attended few. Each session has brought together thought leaders and the practitioners as experts, creating a vibrant platform for learning, networking, and real world insights. These discussions have given many MSMEs and startups the practical tools for growth and long term sustainability. As we enter the 13th edition today, the growth series remains committed to empowering the entrepreneurs with knowledge, connections, and strategies to succeed in today's fast changing business landscapes. Today, we focus on a topic that is both timely and also transformative, is a research collaboration for an SME for their growth and the support from academicians and government. Dear friends, as you know, SME are the backbone of our economy, and they drive employment, foster innovation, global environment, fast changing global environment. Traditional methods of business are now no longer enough. To complete grow to compete, grow, and sustain, SMEs need to embrace innovation, research, and strategic collaborations. Friends, research and development, R&D, plays a vital role in the growth and long-term sustainability in small and medium enterprises. In an increasingly competitive and technology-driven market, R&D enables SMEs to innovate, improve the product quality, reduce the cost, and respond effectively to changing customer needs. By investing in R&D, SMEs can develop new products, adopt advanced processes, and optimize operations, helping them enhance productivity and stay ahead on the competition. Furthermore, R&D strengthens an SME's ability to enter the new market, a confidence to upgrade technology, and create intellectual property that adds lasting value. It also fosters a culture of continuous improvement
making the organization more resilient and future ready. Therefore, strategic investment in R&D is not no more a luxury, but a necessity for SMEs to drive innovation, active sustainable growth, and remain comprehensive and competitive in a dynamic business environment. Dear friends, I will brief you the theme of this today's event, that is power of collaboration. Now it's first of the role of academicians. We have academicians with us. In the developed countries, many must be knowing, in developed countries, developed world, academic institutions play a pivotal role in growth of SMEs. Academic and technical institutions bring a valuable resources for SMEs. Next is cutting edge research and expertise. Faculties and research scholars offer technical knowledge that SMEs often cannot develop internally. Access to the laboratories and technology institutions, academic institutions provide the testing labs, prototyping equipment, and design centers, and that help SMEs experiment without major investment. And the best is student engagement. Internship, joint projects, and innovation challenges link SMEs with young talent and fresh ideas. Second is the support from SME government. For to SME can have from government. To accelerate collaboration, the government has introduced multiple schemes. Design clinic schemes where each helps SMEs to solve design problems with the support of expert institutions. MSME Champion and ZED provides technological guidance, quality improvement, support, and hand-holding thought through academic partners, R&D incentives and grants, which I already told, funding assistance for technology upgradation, which is very important. I was talking to Prashant recently. The SMEs want the technology, but many times technology are costly. So funding assistance for technology upgradation, innovation and prototype development, and cluster level research projects. Also, various governments, state governments and central governments schemes for the support to MSMEs for marketing, finance, subsidiaries, and also filing patents also. Third is how to build a stronger collaboration. Now, SME can benefit greatly when partnership are structured and sustained. Better collaboration can be achieved through. First is regular interaction platforms, problem-led research. Academia should work on the real manufacturing and market challenges, identify the SMEs. Next is shared infrastructure. Government supported common facilities and technology centers can be jointly and cheaply should be used by the multiple SMEs. Long-term MOUs, partnership that go beyond one project to include training facility, consultancy, product research, and testing support, and awareness and handholding. Government bodies, we have with our experts, MSME, DIDFO, and the state government must regularly guide SMEs on various schemes, paperwork, eligibility criteria, and project proposals. Fourth is what is the impact of the collaboration on SME growth? We talk about collaboration. What is the impact? The faster innovation cycles, reduced cost of R&D, improved product quality and design, better competitiveness and export readiness, and adoption of new technology like automation, AI, and green manufacturing. Dear friends, moreover, when entrepreneurial energy, research expertise, and policy support come together, what emerges is more than a growth, and it's a thriving, resilient, and future-ready MSc ecosystem. Dear friends, this we talk about the collaboration.
Now, collaboration between industry, academic, and government entitles. Many people know, and we also know, we have been talking regularly about the collaboration. I know it's not like that nothing is happening, it is happening. But if you talk many times, the things will start, continue to remain because there is no alternative than the collaboration. I will give you, or my experts will give you many examples about the importance of collaboration. The collaboration can broaden perspective through the inclusion of diverse approaches and encourage R&D, innovative solutions, and maybe small or large scale efforts, formal and informal, and involve two or all three entity types. Industry, academic, government collaboration can create the meaningful opportunities to enhance the harmonization of data, identification and coordination of resources, systemization of processes and development, and also management of infrastructure to support impactful scientific exploration. But then collaboration is not just about the technology or policy, it is about the mindset. You should have a mindset for the collaboration. If you want that, I want to collaborate, but I will not open out my cards, then there is not going to be any collaboration. You have to be open, you have to be transparent, you have to be able to take and accept and give the whatever the best you have. The SMEs that succeed tomorrow will be the ones that dare to innovative through R&D, experiment, and leverage the collective expertise around them. So, friends, during today's session, we'll explore how academia and SMEs can co-create solutions, the various government schemes and incentives available for research and development growth, and real-life success stories and actionable insights that you can take back to your business. I encourage each one of you not to only listen, but to courageously engage questions and explore opportunities for collaboration and advantage of collaboration because knowledge grows exponentially when shared and innovation accelerates when minds come together. Lastly, let me have you with this thought. The future of SME is collaboration, collaborative, research driven, and innovation led by bridging the gap between industry, academia, and government. For building a sustainable, competitive, and resilient SME ecosystem, particularly in Gujarat. We are privileged to have today with us Mr. Manoj Kumar Vatsar, Joint Director and Head of Office MSME DFO, Government of India. In this panel, he will address policy academia collaboration. And Mr. Tejas Mehta is a dynamic young administrator from the esteemed Gujarat Industries and Mines Department. In this session, he will shed light on state level policy support and industry academia partnership models. And also, we have one of the great industry and rather we can innovative who has been successful by the innovation, my dear friend Prashant Gandhi, and he will speak on SME challenges, advantage and benefit of innovation, R&D funding choices, skill gaps, and growth strategy. And Dr. Jatinder Pal Singh is a distinguished faculty member of EDI, and in this panel, he will address the research industry gap. You know that EDI's role in MSME support, mindset transformation, and effective collaboration. Also, we have with us one of the most knowledgeable, distinguished expert, Mr. Tarachand Jain, as a moderator of today's event. And Mr. Tarachand Jain is the chairman and managing director of Shri Naukar Metals Limited and Cinnamon Production Limited, and he serves as a board member of IBSA, chaired by the Prime Minister of India, and is the president of Engineering Export Promotion Council and there is Ministry of Commerce and Gujarat chapter, and he also holds a position of Western Region Committee member of the Engineering Export Promotion Council. And Mr. Jain's leadership
roles extend to being the past chairman of the Metal and Engineering Committee at Jito, past president of the Jodhpur Association in Ahmedabad, and board member of the Indian Stainless Steel Development Organization, ISSDO, and he contributes actively as vice president of Auto, now past president, no? You are past president? Auto Industries Association and both Kathwada Industry Association and Ahmedabad Metalware Manufacturers Association with a vision to transform the journey of life from living to winning. That is his motto. Mr. Jain has demonstrated dynamic leadership across industrial, social, and industry development platforms. So I am now inviting Mr. Tarachan Jain. The stage is yours, and to handle the panel discussion, one small line. I have not asked him, but many times a son is known by father. Here, father is also known by son. He is the father of a person, Abhishek Jain, who made Kevirite Jaish and many other Gujarati pictures. And wonderful father and son duo. And I would like to give a big round of applause to Tarachan Jain. And I would like to felicitate him. Tarachan ji. So please, now you can take over. Either from here or from there you can have. Mic is there. Eh? Thank you, Asha sir. A very warm welcome to distinguished guests, panelists, industrialists, SME entrepreneurs, and participants. It is my privilege to moderate today's session. A very important topic, research collaboration for SMEs growth, support from academia as well as from government. It's a very useful program, and we will ask various questions how industries can benefit for the collaboration. As Jamin sir mentioned, it is India's MSME sector contributes 30% of the total GDP and 45% to the manufacturing output and nearly half of the exports. And yet it is comes to research adoption, innovation, and academia industrial collaboration, we are still miles to go ahead. Today, we have with us an outstanding panel that represent the government, the state administration, the industries, and academia, exactly the four pillars required for build a strong and future-ready MSME ecosystem. In today's world, MSME cannot grow only on traditional manufacturing trading to scale globally. So SME needs the research-based development, research-based collaborations, technology upgradation, strong government support, collaboration with universities, and skilled manpower. This session is designed to bring clarity, direction, and practical insight for MSE across Gujarat and India. What that I would like to introduce all the panelists with their open thoughts. The panelists here with Mr. Manoj Kumar Vats, an officer of the Indian Enterprise Development Services, currently servicing as Joint Director at MSME DFO Ahmedabad, a postgraduate in Chemistry and Finance Management. He has previously led the MSME testing centers in Mumbai and held key position at the Ministry of MSME in New Delhi. Originally, he is from Delhi,
He brings significant administrative and technical expertise to MSME development and support mechanism. I will request Dr. Vasa to facilitate him. Mr. Tejasbhai Mehta is an engineering from University of Mumbai and MBA from HL Ahmedabad, Gujarat University. Experienced over 17 years, comprising over a decade in private sector and now serving Gujarat government as Assistant Commissioner in Industry and Mines Department. Mr. Prasant Bhai, I request Vasa sir to facilitate Tejas Bhai. You do it. Sir, it's your duty. Mr. Prashant Bhai Gandhi. He is a mechanical engineer from BVM and MBA from BK School of Business Management, who began his entrepreneurial journey at 27, co-founding a venture focused on creating import substitute products and exporting them worldwide. His companies supply to Indian space and defense sectors, export to over 33 countries, and have earned 45 awards across innovation and R&D manufacturing. His excellent with expertise in lean management and strategy. He also contributes to institutions such as Ahmedabad Management Association, Gujarat Innovation Society, and of course, Gujarat Chamber of Commerce and Industries. I request Vasa sir, please facilitate. We call him as a man of innovation. Yes. Dr. Itinder Pal Singh is an academician, leader in marketing, scholar with over 30 years of experience spanning academia, industries, and international market. He recently translated from APJ School of Management, New Delhi, where he served for 16 years in various capacities, including Professor of Marketing, Program Head PGDM, Deputy Director, and Officiating Director. He holds PhD and MBA in Business with teaching the research interest in consumer behavior, retail, relationship, marketing, etc. Now, you join me, sir. Yes, sir. Thank you very much. Let's start with the question. We have divided the question in various different modules. So first, I want to ask Manoj sir. So this is regarding policy and schemes of the government. How is the ministry strengthening research collaboration between MSME and technical institutions under schemes like MSME Champions, JET, or Design Clinic, etc.? Thank you, sir. In fact, one scheme which you missed is the incubation. We are having one scheme for incubation, in which majority of the leading universities and technical institutes are the host institutes where you can submit your idea. If you are having some idea, you are having some innovation, you are having some product, you thought you are having some thought, I can make this product like this. So we can support you, and there is a system of up to 15 lakhs. You can go through any host institutes. If you don't go to the host institute, you can directly come to us.
We are having here some tool rooms also in Ahmedabad. Also, we are having in IGTR, Indo-German tool room. You can contact them also. Depending on your ideas, we are having different host institutes. Number one. Number two, if you are having some idea to reduce that pollution, or you increase the production, or you some reduce the rejections, then we are having the scheme of Z, zero effect, zero defect. In this scheme, we can give you the support of up to 3 lakh for the purchasing of machinery and 2 lakh of the consultancy. So you can avail these two schemes as far as the innovation research is concerned. If you are successful to have that product or something, then we can support you for your patent filing also. So we are having several IPFC, intellectual property facilities center in Ahmedabad. You can go there, and we will support you financially as well as technically also. You go there, your cost of majority of your cost will be borne by us. Apart from that, we are having some schemes. If you are successful and if you want to manufacture a prototype, suppose you are having some idea and you want to manufacture one piece. So the problem is that you will require die, you will require factory and all that. So we are having the prototype development center also. So in IGTR you may visit, we are having several other prototype institutes also, where you can go, and we will produce one product for you. If you are having some idea, if it is successful, then you can go for the mass production. Thank you, sir. Now, this question to Tejas Mehta. It is related to state policies. Sir, Gujarat is known for MSME friendly environments. What new policies or incentives are being planned to promote research lead MSME growth, particularly for research lead? Yeah. So, as you rightly mentioned, Gujarat is like we are having large scale of MSME units over here. Year on year, we are adding new units, and government is planning. We all know Make in India is there, right? So, it's Make in India doesn't mean just for production, but innovation as well. So now the thing which is changing is not just research and development. R&D is always there, but now the new term coming is research and innovation. So we need not to remain till just research or development, but research, innovate, then do patent, and then do the growth as well, right? So when we talk about incentives for research-led MSMEs and all, so government is providing. So we have Atmanirbhar Yojana, so which is known as industry policy for Gujarat, and formerly known as Atmanirbhar scheme as well. So under this scheme, there are various factors which gives certain incentives for the research part, for let's say and patent as well. So research is one, patent is another. Then there is technology acquisition as well. So if there is a unit, they want to do some patent filing, be it a domestic patent, be it international patent, government provides certain assistance, financial assistance, through which they can process, they can complete their entire process, and they can reduce their cost as well. So that is one. Right. Another thing is about the technology acquisition. So many times it's not like entire thing you develop. You procure certain technologies, let's say a platform, and on that particular platform you develop entire product. You do the research on that product. So even for that particular technology acquisition, government is there to give certain subsidy. We call it subsidy on various factors. So then under this Atmanirbhar scheme, every unit working in Gujarat, they are eligible for technology upgradation as well as technology acquisition. And that need not to be foreign technology only. It can be Indian technology, it can be partnership firm, or it can be foreign technologies as well. And in addition to that, we are doing various collaborations where jointly research can be done between academia, industry, and government would be playing a facilitation role, so that all three comes on the same platform, and innovation can be done. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Prashant Bhai Gandhi,
He is a industrialist and he is very wide experience of collaborations, research and all this. આપણે હવે એમને આપણી ભાષામાં જે આપણે પ્રેક્ટિકલી ગળે કેવી રીતે ઉતરે, હું એમને રિક્વેસ્ટ કરી દો, હી ઇઝ વેરી પાવરફુલ ઇંગ્લિશ, હું એમને રિક્વેસ્ટ કરી કે ગુજરાતી ભાષામાં આપ જે એટલા બધા ઇસરોને સપ્લાય કરો છો કે બીજી બધી પ્રેસ્ટિજિયસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને છે, પીએસયુને સપ્લાય કરો છો, તો આપને આજે રિસર્ચ, કોલોબરેશન, ઇનોવેશન, R&Dમાં શું ચેલેન્જ આપને ફેસ કરવા પડ્યા છે, અને અમારે જે બી પાર્ટિસિપન્ટ છે એમને ગાઈડ કરો કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે કઈ રીતથી આપણે એને આગળ વધારી શકાય અને પ્રેક્ટિકલી એને કેવી રીતે કરીએ, કેમ કે યુ વાઇડ પ્રેક્ટિકલ એક્સપિરિયન્સ, તો આપનો એક પ્રેક્ટિકલ એક્સપિરિયન્સ પાર્ટિસિપન્ટ સાથે શેર. સારું કર્યું એમણે મને સરળતા કરી આપી ગુજરાતીની, એટલે વિચ ઇઝ રિયલી ગુડ. પણ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ છે કે આ આપણે એસએમઈમાં હોઈએ એટલે કેટલાય ફંક્શન 2-3 માણસો કે એક માણસ સંભાળતો હોય, એને બધી બાજુ દોડવાનું હોય. સર मैं हिंदी में बताऊंगा, ठीक है ना, आई थिंक हिंदी इज ओके, है ना. तो उसको तो कई जगह दौड़ना होता है, तो रिसर्च क्यों करेगा, कैसे करेगा, और चैलेंजेस क्या आएगी. उनका मेन क्वेश्चन तो मुझे लगता है चैलेंजेस पे है. तो जैसे हमने एक टेक्नोलॉजी इसरो से खरीदी है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से, एंड खरीदने के बाद हमें जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया तो हमें भी था कि ये कैसे होगा, बट मेरा जो अनुभव है वो ऐसा है कि इन संस्थानों का जो एटीट्यूड है वो पार्टनरशिप अप्रोच होता है. ये लोग ये सोचते हैं कि हमने इनको टेक्नोलॉजी दी है, हम सक्सेस करके छोड़े इनको. तो जैसे मेरा अपना अनुभव है कि उसका पूरा एक वर्टिकल अभी क्रिएट हो रहा है मेरे वहाँ पे. मैं तो खाली एक ट्यूब सप्लाई करता था जो हर सैटेलाइट में जाती है. वी आर द ओनली इंडियन फर्म इन इंडिया हु हैज डेवलप्ड दिस. तो सिलेक्शन कैसे होता है, उन्होंने ये देखा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए अगर 100% लोकल कंटेंट है तो अच्छा है. बाकी वाले लोग जो थे, जो टेक्नोलॉजी लेने आए थे, उनको रॉ मटेरियल बाहर से लाना था, वेरेज हमें यहीं पे बना के हम उनको दे रहे थे. हमारा कल्चर भी उनके साथ सालों से सेट हो गया था, तो ये टेक्नोलॉजी भी मिली और अभी वो वर्टिकल भी क्रिएट हो चुका है. और साथ साथ में सर साथ में ही बैठे, वो परसेंटेज नहीं बता रहे थे, बट देखिए आप अगर मशीनरी डालोगे तो आपको रीजन के हिसाब से रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में 5%, 10%, 15% सब्सिडी मिलेगी. बट टेक्नोलॉजी में मैंने जब ये टेक्नोलॉजी ली थी आत्मनिर्भर की पॉलिसी के पहले 5 साल पहले, तो मुझे 60% पैसा टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट ने आरटीजीएस करके ट्रांसफर कर दिया था. वेरी क्लीन ट्रांसपेरेंट थिंग. तो आज टेक्नोलॉजी लेने के लिए बहुत सुविधाएं सरकार ने करी है. मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं जिसमें मैं 2-3 फॉरेन की इंस्टीट्यूशन की भी क्विकली बात करता हूं. जैसे एसएमई है, स्मॉल स्केल, हमारा तो माइक्रो यूनिट है. अभी बड़ी कंपनी से शादी करनी, कोलैबोरेशन करना, मतलब आप तो उसके नीचे बैठ गए, है ना, हर महीने उसको रिपोर्ट देना है. तो वी वर नॉट विशिंग दैट. तो हमने क्या किया कि नेदरलैंड और जर्मनी, वहां पे दोनों जगह पे, एक नेदरलैंड में पम्प करके संस्थान है, जर्मनी में एसीएस करके संस्थान है, सीनियर एक्सपर्टन सर्विसेज जर्मनी में. पम्प जो है नेदरलैंड सीनियर कंसल्टेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इनसे हमने बात करी एंड कंटिन्यूअस बेसिस पे आज तक पिछले 19-20 साल में टोटल 18 एक्सपर्ट्स मेरे वहाँ आ गए काम करने के लिए. वो 15 दिन के लिए काम करने आते हैं और फिर पूरा साल भर वहाँ पे बैठे बैठे हमारा काम करते रहते हैं. तो ये क्या हो गया, इनफॉर्मल मैरिज, जिसमें आपको सलाह मिलती रहती है. हाँ, रिलेशनशिप, 1 रुपया भी देना नहीं है. जब एक्सपर्ट यहाँ पे आते हैं तो हॉस्पिटलिटी जो है, अहमदाबाद एयरपोर्ट टू अहमदाबाद एयरपोर्ट जब तक छोड़ते हैं तब तक होटल वगैरह, फैक्ट्री हर रोज ले जाना.
बाकी कोई भी व्यवस्था नहीं, जाने आने का खर्च भी पूरा वहाँ के संस्थान देते हैं। एक बार तो हमें ज़रूरत थी ऐसे एक्सपर्ट की मेटलर्जिकली कि उन्होंने वहाँ से रोल्स रॉय कंपनी से, जर्मनी से एक मैडम को यहाँ भेजा, छुट्टी लेके आई, बट हमें कोई पैसा नहीं चार्ज किया। एंड देन आईआईटी ने भी व्यवस्था कर दी कि आप 10 दिन के लिए लेबोरेटरी तुम्हारी है। हम ओनर से लेके हमारे कर्मयोगी जो वर्क करते हमारे फ्लोर पे, हम सब लोग ने लेबोरेटरी में मैडम के साथ, आईआईटी के प्रोफेसर्स के साथ काम किया एंड वी लर्न अ लॉट। तो और तीसरी व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें गवर्नमेंट की सहाय की भी जरूरत नहीं है। डीआरडीओ जो है, इन्होंने कई टेक्नोलॉजीज फ्री कर दी आज, जैसे बायोडिग्रेडेबल ग्रेन्यूल्स है, बायोडिग्रेडेबल जो जो चीज है उसकी टेक्नोलॉजी उन्होंने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है। एंड हैंड होल्डिंग करते हैं, एंड देन यू आर अलाउड टू पुट अ स्टैम्प ऑन योर प्रोडक्ट ऑल्सो, टेक्नोलॉजी फ्रॉम डीआरडीओ नाउ, विच इज अ वेरी बिग थिंग। तो टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस जरूर होते हैं, क्योंकि जब वो लोग आते हैं तो उनकी बात समझना, समझ के होमवर्क करते रहना, फिर उनके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करते रहना, वो चैलेंजेस जरूर रहते हैं। बट आजकल जो है इतने संस्थान टेक्नोलॉजी दे रहे हैं इंडिया में और बाहर से ऐसे एक्सपर्ट, कि अगर किसी को ऐसी प्रोडक्ट्स में हमेशा रहना है, जैसे ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी की बात सर लोग करते रहते हैं कि जिसमें और कोई लोग नहीं है, तो टेक्नोलॉजी में जाने से ही ऐसा संभव है और कई चीजें अभी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू सर। आप एकेडमी से हो तो मैं एकेडमिक रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करूंगा। वेयर डू यू सी द बिगेस्ट गैप बिटवीन एकेडमिक रिसर्च एंड एक्चुअल एमएसएमई मार्केट रिक्वायरमेंट? थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट अभी तक जो लाइक द पैनल इज देयर, तो पैनल ने कहा कि हम जब रिसर्च की बात कर रहे हैं तो हम नई नई बात कर रहे हैं, लाइक वी आर टॉकिंग ऑफ न्यूअर प्रोडक्ट्स, न्यूअर टेक्नोलॉजीज। मुझे लग रहा है कि अगर हम टॉपिक को थोड़ा सा और ब्रॉडन करें कि जो रिसर्च है, कोलैबोरेशंस है एसएमई ग्रोथ के लिए, तो लेट्स नॉट रिस्ट्रिक्ट टू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और न्यू टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। जब अगर मैं रिसर्च को देखता हूँ अपने पिछले कुछ सालों के करियर में, तो रिसर्च है क्या, अगर हम उसको थोड़ा सा अगर आधा मिनट लगाएं, तो रिसर्च इज अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चंस, नॉट जस्ट एनेक्डोटल कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अब मैंने ऐसा हो रहा था इसलिए उसको करता जा रहा हूँ। एक्चुअल है उसको सिस्टमिक वे में देखने के लिए फ्रेम करना है। तो अगर हम शुरू करते हैं, तो अगर मैं ये 5 स्टेप प्रोसेस है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी है, फिर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं एंड में कोई इंसाइट उसमें से निकल के आ रही है कि नहीं आ रही, व्हाट एक्शन कैन आई डू। तो रिसर्च is not always about newer things, it's always many times it is inward looking also कि यार मैं अपने ऐसा क्या बेहतर कर सकता हूँ। अगर छोटी सी अगर मार्केटिंग की बात करें, तो मेरे पास डेटा रोज आ रहा है, कौन सी सेगमेंट मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है, कौन से कस्टमर अगर मुझे छोड़ के जा रहे हैं। लाइक आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स इन माई मार्केटिंग क्लासेस कि मार्केटिंग में आप हम हमेशा देखते हैं कि जो कस्टमर छोड़ के चला गया, कस्टमर डिफेक्ट कर रहा है, कस्टमर एट्रिशन है, तो क्यों क्यों हो रहा है। लेकिन कई बार हम ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि इफ somebody is loving us, giving us lot of business, why that person is giving us that kind of business। तो अक्सर इन बातों को हम भूल जाते हैं। और रिसर्च एक बड़ी सा, जब जब कई बार अगर हम बात कर रहे हैं एमएसएमईज के साथ, तो द मेनी टाइम्स आई पर्सनली फील कि वो इस परसूट में इसलिए नहीं जाते कि उन्हें लगता है एक बड़ा हवा सा है, देयर इज अ it looks like a large animal that why should I get into ये embark करने के लिए मेरे पास ना उस तरह के रिसोर्सेज हैं, ना मेरे पास उस तरह के इंटेलेक्ट है। तो आई पर्सनली फील यहाँ पर एकेडमिया बड़ी हेल्प कर सकता है। रिसर्च जो एमएसएमई की रिसर्च है बड़ी कंटेक्चुअल है, उसको फास्ट चाहिए। एकेडमिक हम थोड़े स्लो होते हैं, हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, तो लेकिन मिलके काम किया जा सकता है। दिस आई पर्सनली फील देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी डन। देयर आर फ्यू, तीनों लोग बैठे हुए हैं, तो कई बार ओपननेस की तीनों तरफ से जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकेडमिक अगर आप 90% प्रोफेसर्स के पास जाओगे तो वो अक्सर आपको कहेंगे कि अगर आपको मेरी मदद चाहिए, मेरा स्टूडेंट्स आपको अवेलेबल, मैं तैयार हूँ।
लेकिन कंटेक्स्ट फ्रेमवर्क राइट डालना शायद मेरे हिसाब से वो बड़ा जरूरी है। और कई बार रिसर्चेस हमने की हुई हैं, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है उसको। अक्सर यस्टरडे आल्सो आई वाज इन अ सेशन, हम लोग एडीआई में ट्रेनिंग कर रहे थे, हमारे पास सारे साइंटिस्ट लोग आए हुए थे, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू लुक एट योर रिसर्च फ्रॉम अ लेंस ऑफ मार्केटिंग। तो आपको जो आता है, प्रोसेस आता है, आपने उसको रिसर्च कर दी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी जरूरत क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर को चाहिए कि नहीं चाहिए, उस रिसर्च को यूज कौन करेगा। सो दैट इज पर्सनली आई फील कि कंटेक्स्ट सेटिंग एंड लिटिल स्पीडिंग अप अगर प्रोसेस अगर कर सकें, और ओपननेस अगर आए। आप, आई अंडरस्टैंड आपका बिजनेस है, आप कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन कई बार नए बच्चे आते हैं तो उसको नए लेंस से देखते हैं। तो आई गेस दैट ओपननेस एंड कमिंग अप कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, even understanding and letting us know, I guess that is also something which can be a very good starting point. This is where I feel. Thank you so much. थैंक यू सर, आपने बहुत ही सरल कर दिया। जो आम आदमी के दिमाग में रिसर्च मीन्स बहुत बड़ा भारी शब्द लगता है, पर आपने बहुत सरल कर दिया उसको। थैंक यू सो मच। मैं मनोज सर से ये पूछना चाहूँगा सर कि जैसे बहुत सारी एमएसएमईज को ये सारी स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, वो लोग जानते नहीं हैं या उनको कोई सोर्सेज नहीं मिलते हैं, तो वो जो उनके पास में नॉलेज नहीं होना और आपकी सारी फैसिलिटीज़ होना, तो वो जो गैप है उसके लिए आप क्या करते हैं कि भाई वो इंडस्ट्रीज और आपकी पॉलिसी के बीच में जो गैप है उसको फिलअप कैसे किया जाए? ये बहुत ही प्रैक्टिकल इशू है, ये जैन साहब ने रेज किया। हम लोग ईयर्स टुगेदर इसको फेस करते रहे कि हम लोग कोई स्कीम बनाते थे, उसका हमें रेस्पॉन्स नहीं आता था। और स्कीम जैसे आपको पता है सनसेट क्लॉज होती है, यानी 5 साल के लिए होती है। तो फिर हम लोग ढूंढते थे प्रॉब्लम कहाँ आई है, कि मतलब हम लोग ने उसको गलत समझा था कि एक्चुअली वो लोगों की जरूरत ही नहीं थी या लोगों तक पहुंची नहीं। हम लोगों को बहुत बाद में पता चला कि हम लोगों की स्कीम की अवेयरनेस ही नहीं होती, यानी हम जो राइट पर्सन होते हैं, जिस टारगेट जो हमारा होता है वहां तक वो चीज पहुंचने से पहले हमारे 5 साल पूरे हो जाते थे। तो उसके लिए हमने अलग अलग चीजें की, बहुत सारे हमने पहले प्रोग्राम्स किया करते थे जगह जगह जाके, बट उनका एक इम्पैक्ट जो है वो बड़ा कम होता है। तो अभी जो कोविड हुआ, कोविड ने कुछ अच्छी चीजें भी दी। तो उसमें हम लोगों ने एक पोर्टल अभी डिजाइन किया है, माई एमएसएमई। अगर आप इस पोर्टल पे जाएंगे ना, तो आप हमारी लगभग सारी जितनी भी स्कीम्स हैं वो एक जगह देख भी सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। यू नीड नॉट टू विजिट एनी गवर्नमेंट ऑफिसेस। और सभी में हम लोगों का जो इंटरवेंशन है वो वैसा नहीं है, फिजिकल नहीं है, आपको जाना कहीं नहीं है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी वहीं पे देने हैं, आपको जो आपका पेमेंट है वो भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने उसमें एक और अभी इनिशिएटिव लिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो वो भी स्कीम्स रन करते हैं। जैसे टेक्सटाइल के लिए कुछ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कुछ चला रही होती है, तो हम लोगों ने उनकी स्कीम्स को भी इसी पे लाके एक जगह रखा है। तो अगर आप वो भी कंपेयर कर सकते हैं। अभी हम उसमें एक चीज जो हम लोगों को भी दिक्कत आ रही है, या जो हम सोच रहे हैं, वो है हम स्टेट की जो स्कीम्स हैं उनको कैसे लेके आए, बट क्योंकि वो स्टेट स्पेसिफिक होती है और हम सेंटर है, यानी हम लोग तो हर स्टेट में है, तो वहां पे एक हमें इश्यू आ रहा है। बट मैं मतलब यू ऑल एंड माई सेल्फ ऑल्सो वी आर फॉर्चुनेट कि वी आर इन गुजरात। तो यहाँ का जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वो बहुत प्रोएक्टिव है, तो उनकी स्कीम्स का अपना जो अवेयरनेस है वो डेफिनेटली वो अच्छे से कर रहे हैं। बट हम लोग फ्यूचर में ये भी कहीं सोचेंगे कि हमारे पास जब आदमी आए तो वो सिर्फ हमारी स्कीम्स के बारे में मालूम ना करे, वो स्टेट गवर्नमेंट की भी करे। उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं सर। सर ये क्वेश्चन मैं जमीन भाई वसा सर से भी पूछना चाहूँगा कि आप इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस से जुड़े हुए हैं। आपके ये एएमए एमएसएमई डेवलपमेंट सेंटर है, जिसका एक एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी में भी है, निर्मा यूनिवर्सिटी में भी, और अलग अलग संस्थाओं में जो आप प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई एमएसएमई इंडस्ट्रीज में ये अवेयरनेस आनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है ये अवेयरनेस उसमें आप इतने सारे प्रयत्न करते हो तो उसका क्या रिजल्ट है? क्या आप उससे सेटिस्फाइड है या और अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, या यहाँ जो भी एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं उनको क्या करना चाहिए? थैंक यू ताराचंद भाई।
First time somebody has asked me this question. I'm very happy that somebody has noticed what I'm doing today. Thanks again. Because I'm a self-made entrepreneur starting from not zero, but from minus. I know each and every problems of MSME before also, today also, now also, because doing the business under the volatile situation is very difficult. And today's era is volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Mukha. So I thought that if the problem which I am facing, in spite of having such a resourceful person, and I'm having a problem, my many issues are not getting cleared in the government or R&D or innovation. I'm not able to understand the policies of government, whether I'm eligible or not, the criteria is eligible, I'm available or not. And sorry to say that I'm not now, but earlier it was very difficult to approach the officers and get the things understand. तो उसमें क्या वो मैंने बोला चलो ये काम हो गया, इतने साल काम किया. You know that when I had a problem with the China's material dumping in India, and we were not facing a lot of problem. At the age of 58, I started research. For 5 years, I did research. How China can be such a economy of scale cannot be the only issue that China can beat us. Doing organized research for 5 years, I found that each and every MSME should do. Abhi kisi ne bataya, I think, that research is not research. What you are doing, something out of box you have to think. ये उसको मैं इस तरह से करता हूँ, किस तरह से करूँ जिससे मेरी कॉस्ट कम होती है, मेरी कॉम्पिटिटिवनेस होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है. This is a research and innovation. So I did it. So I said, what I did, I should go to my other fellow MSMEs also. And again, I was looking to the startups. All startups start so much excitedly. And you know that 60-70% startup could not continue to become an entrepreneur. So I thought that I should mentor the startups. So with that, with my domain of MSME, university has offered me a chair where we are doing a lot of activities for SMEs, seminar, counseling, and I'm mentoring the startup also. And I'm happy to state that almost in last year, I mentored and 5 startups. I made sure that they become the entrepreneurs. Whether they have a marketing problem, finance problem, technology problem, hand-holding is very important. Nurturing at the excipient level is very important. Doctor, जब patient मरी जाए पे दवा आपा जाओ कि injection आपा जाओ, there is no. So you must know what is the problem. So MSME startup, they have a problem. Then I thought that when I did research in management and I could successful, so I put a chair in NIRMA. Dr. Jamin was a chair for research in business management and entrepreneurship, where I wanted the various point has to be the discuss. I have appointed 2 professors, given the subject, and I had decided when they complete the paper, it has to be, it was my MOU with them, it has to be included into their syllabus. So that is what my idea is. And AMA is my second home, brother. So Malay bhai, when he was the president, he invited me. Since you are doing a lot of MSME activities, you should start center over here. And I immediately said yes. And here we are doing 2 series. One is the emerging opportunities for MSMEs. There is 1 lecture. So suppose he is MSME doing some business, but he's not doing good. So he has a money. He wants to find out what is the other opportunities available. Who is the consultant for that? What is the market for that? And second scheme is
journey from education to entrepreneur. That is been in university, and here SME growth series, which I started calling the experts like you in branding, management, export. So these are the areas, and I feel satisfied. For me, it's a time to give something back to the society, and that is what I am doing today. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच सर। अपने बिल्कुल इसको फॉर्मल नहीं लेके एकदम प्रैक्टिकल वे में ले जाना चाहते हैं, जिससे सब लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो। और वो ना, मैं तेजस सर से पूछना चाहूँगा, हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएट एंड cluster help MSME collaboration with technology providers like academia, universities? Sure. So before answering that, I would like to add to the previous question. सर ने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स आपको माई MSME से मिलेगा. Same way, state government has investor facilitation portal. So if you go to investor facilitation portal, you can get all the schemes which is there for state government. And one more thing, जो सर ने पूछा था कि how you create the awareness. So I'd like to tell one thing as well. So this is our responsibility being part of government and being part of this department. Like we need to promote the schemes, we need to create the awareness, and we try to do till the extent we can do. But फिर भी ऐसा होता है, जैसे सर ने बताया कि काफी बार ऐसा होता है कि स्कीम काफी टाइम हो गया, still people would not be knowing. बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द एंटरप्रेन्योर्स एज वेल. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हमारा स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल में भी है, स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा स्कीम है जहाँ पे एकदम जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, मतलब इट्स नॉट एंटरप्रेन्योर इज नॉट वन कि जिसका खुद का यूनिट है या बिजनेस है, वो ठेला लगाता है, ही इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, राइट. वो भी एक एंटरप्रेन्योर. अपने घर के बाहर वो बैठ के वो सिलाई काम करते हैं, छोटा मोटा हम जो करवा के आते हैं फुटपाथ के आसपास, दे आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, राइट. तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलते हैं. हमारे यहाँ पे वो लोग डे इन डे आउट दे अप्रोच टू गवर्नमेंट ऑफिस. उनको किसी ने बताया कि फ्री में मशीन मिल रहा है, दे कम टू गवर्नमेंट ऑफिस, दे इंक्वायर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. काफी बार ऐसा होता है कि विधवा सहायता कहाँ से मिलता है, पालक माता पिता का कहाँ से मिलता है. कल ही एक लेडी आए थे, शी वाज एजेड, उनकी दामाद उनकी कुछ एक्सीडेंट गुजर गए, तो शी वाज सेइंग कि माय डॉटर इज यंग, अभी 3 बच्चे, क्या करे, विधवा सहायता कहाँ से मिलेगा. मैंने बोला कि आपको समाज कल्याण से मिलेगा. कहाँ पे ऑफिस है, वहां पे ऑफिस है, वहां आपका कोई पहचान है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, वो जाने में हिचकिचाते नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू एजुकेटेड स्ट्रक्चर्ड बिजनेस ओनर्स, वो एक ऐसा आता है कि यार मैं जाऊं, शुड आई गो, शुड आई अप्रोच, वो कैसा लगेगा. सो वी आर सिटिंग जस्ट फॉर यू ओनली. एंड व्हेन यू हैव रिसोर्स पर्सन, जैसे सर ने पूरा MSME का यहाँ पे वसा साहब ने किया हुआ है, फैसिलिटेशन सेंटर, इसने रिसोर्सफुल पर्सन्स आपके पास है. सो यू नीड टू गो एंड यू नीड टू मीट देम एज वेल, बिकॉज शायद गुजरात में जितने एंटरप्रेन्योर्स है, परसेंटेज टर्म्स में कोई और स्टेट में नहीं होंगे, राइट. So we cannot reach to each and every entrepreneur, but whenever you have need, reach to either government department या तो ऐसे resourceful person से उनके पास आप जाइए. And nowadays everything is digitized. हमारी 90% schemes, 10% है अभी भी offline, बाकी 90% scheme is completely end to end is online. So you need not to submit any document. You can even see आपका application कौन से level पे है, right? So you can see entire thing transparently. Now coming to the question, to the cluster thing, right? So government has done various cluster development programs. In Gujarat, we have number of clusters available. Like I'll give you examples. As Jamnagar is there, and brass part we call. So that is the cluster. Ahmedabad, we go engineering cluster would be there. If we go to Rajkot, similar engineering cluster would be there. If we go to Morbi, ceramic center would be there. Ceramic ke liye main. If we go to Surat, then diamond cluster would be there. So what under this cluster government is doing, they are creating common facility center and testing labs. So this labs are equipped with really high-end equipments. जो अगर इंडिविजुअली कोई यूनिट लेने के लिए जाएगा, then it will be very expensive. It will not be possible, or it will not be practical for a business to own that kind of things. But under this common facility center and under this technology labs, this is being installed, and
government would be facilitating that. कोई क्लस्टर अगर बना रहा है then government would be providing them certain facilities. जैसे उनका क्लस्टर बन रहा है तो वहाँ पे रोड बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, so that government do. Then they need, as I mentioned earlier, कुछ technologies they want to acquire, then government is going to give the subsidies. And along with that, academia is also been, so जैसे incubation center central is running, similar way Gujarat also has startup policy, right? And we have also incubation centers. Just you go to IIM, you go to IIT, you go to JLS University, you go to Ahmedabad University, all of them are either center of excellence or they are having incubation center. You go there, you do the research, government has a kind of fund of funds. So fund of funds means a पूरा एक फंड गवर्नमेंट ने क्रिएट किया हुआ है विच इज बीन प्लेस्ड देयर. एंड फंड में भी ऐसा है कि फ्रॉम डे वन दे आर नॉट गोइंग टू, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू गिव यू मनी. फर्स्ट दे विल गिव यू इंफ्रास्ट्रक्चर. आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको अहमदाबाद में बिजनेस करना है कि कहाँ पे बिजनेस करें, राइट? यू नीड स्पेस एंड स्पेस इज लाइक बहुत कॉस्टली है. सो दे गिव यू स्पेस टू सिट, they give you space to have your meetings, they give you space to do your research, then your academic support is also there. Their candidates are also there for any kind of research. And slowly when you reach to a certain level, then for prototype development, then for product development, government is going to give you certain financial aid as well. So ये पूरा आपका cluster में भी हो रहा है, आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ भी हो रहा है. तो ये तीनों मिलके ये पूरा क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के साथ हम लोग ये कर रहे हैं. સર થેન્ક યુ. પ્રશાંતભાઈ, આપણે ચેલેન્જની વાત નહીં કરીએ પણ એક ઇઝી જે છે એકદમ સરળ, જે આટલી બધી યુનિવર્સિટી અને એકેડેમી છે જેને ત્યાં આજકાલ લગભગ રિસર્ચનું કામ ચાલે છે, એમની જોડે ટેકનોલોજી હોય છે, તો આ ટેકનોલોજી લેવાનું, જેવી રીતે કર્ણાવટી યુનિવર્સિટી છે, એલડી એન્જિનિયરિંગ છે, એટલી બધી જે ઇન્સ્ટિટ્यूशंस છે, ईडीआई છે, तो उनके पास से ये लेना कितना इजी है. मैं चैलेंज की बात नहीं करता हूँ, कितना इजी है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है भाई बहुत डिफिकल्ट है, कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे नहीं किया. थोड़ा ब्रीफ में आप बताइए कि वो कितना इजी है, कैसे ले सकते हैं आप. हेलो, હવે આવે છે? हाँ, तो जैसे वी केम आउट, हम लोग ने एक नया प्रोडक्ट ग्रुप एस्टैब्लिश किया था हमारी फर्म में, और हमें उसको वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग करना था. पहले एक में कर रहे थे, 35 कंट्री तक हम पहुंच गए थे, दूसरी में करना था. तो वी अप्रोच IIM, उनके जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंपलसरी कोई प्रोजेक्ट लेना होता है, तो 5 बच्चों ने पेड प्रोजेक्ट लिया. एंड देन इतना बढ़िया किया कि मुझे वर्ल्ड के करीब 100 कंट्री का 1441 लोगों का पूरा डेटाबेस, वेरीफाइड डेटाबेस बना के उन्होंने दिया. नाउ दैट वाज रियली ग्रेट, क्योंकि अगर मैं अपने आप करने जाता तो नहीं होता था, और पेमेंट भी कुछ बड़ा नहीं था. तो और जैसे अभी हमें इस प्रोडक्ट के लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है कि कौन से ट्रेड एग्रीमेंट का कहाँ एडवांटेज लेना है, कौन से कंट्री को हमें ज़्यादा फोकस करना है. तो IIT रैम हैज कम अप. IIT रैम के जो प्रोफेसर सर है वो कहते मैं और अपने स्टूडेंट के साथ, मैंने उनको एक ही चीज़ बताई जो सर आपने बोला. मैं बोला सर टाइम स्केल पे आप कर पाएंगे? ही सेड वी विल डू इट. मतलब 5 महीने की मोहलत है आपको, 1 महीना प्रिपरेशन का रिपोर्ट. दे सेड वी विल डू इट. तो अभी क्या है, कॉलेजेस भी ऐसी तैयार हो गई है कि ये लोग काम करने के लिए तैयार है. तो इकोसिस्टम में इतना ज़्यादा बदलाव अभी आ रहा है कि किसी को भी, और मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, जिस चीज़ के इन्वेंटर यहाँ पे ही है, देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम्स होते हैं, ये खत्म हो गया, आप घर पे गए. बट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम लोग ने इनकी लीडरशिप में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सपर्ट्स प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके तहत कंटिन्यूअसली, मतलब लीडरशिप से हमने प्रॉमिस लिया था, प्रेसिडेंट्स आते रहेंगे जाते रहेंगे 2-2 साल के बाद, बट दे प्रॉमिस्ड कि आपका ये प्रोग्राम जो है ना कंटिन्यू रहेगा, वी विल फुल्ली सपोर्ट. तो ऐसी सुविधा है कि जहां पे लोगों को ये जानकारी घड़ी पड़ी मिलती रहती है. तो ऐसी व्यवस्था है. थैंक यू. आप अभी मेरी बारी है.
कि आप तो मॉडरेटर, कुछ आपके लिए तो कुछ बोलेंगे नहीं. But friends, it is very interesting to listen a success story of Tarachand Bhai. Given a short, it is very interesting, educative, and also very informative also. I'm sorry, I'm crossing the border without asking you, but I think that my people should know about. I'm sorry. Sorry to my other fellow panelists also. નથિંગ લાઈક સોરી સર. એટલે સિનેમેનની વાત કરવા મુજબ मित्रों, आपको मालूम होगा कि बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट और बीइंग ए मारवाड़ी कम्युनिटी, आज से 10-15 साल के पहले यदि किसी बच्चे को फिल्म इंडस्ट्रीज में भेजना था तो सोशली बहुत डिफिकल्ट था. सब चीज़ों का विचार करना पड़ता है कि भाई आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, समाज एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा. और उसने तो बीबीए किया है तो आगे क्या करना है. तो हमने सारा ब्रेन स्टॉर्मिंग किया कि भाई क्या, लगभग 20 डे एंड नाइट हम सभी फैमिली मेंबर बैठ के और उसके ऊपर विचार किया. मगर उसमें जो अभिषेक जैन में जो पैशन था, उसमें जो क्रिएटिविटी था, उसको हमने पहचाना और हमने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि नहीं, इसको फिल्म इंडस्ट्रीज में भेजना है. और उसने सुभाष गाई की विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल करके जो फिल्म इंस्टीट्यूट है, उसमें मास्टर्स ऑफ फिल्म डायरेक्शन में उसने डायरेक्टरशिप की. और आप सब जानते हैं कि कैसे गुजराती मूवी केवी रीते जैसे एक टर्न अराउंड हुआ. तो उसने ये रिसर्च समझो, कोलैबोरेशन समझो, बोल्ड डिसीजन समझो, ठीक है, वो लिया. तो आज पूरी गुजराती फिल्म इंडस्ट्रीज हो गई और आज की तारीख में प्रायोरिटी लोग हिंदी नहीं मगर गुजराती देखते हैं. और वेरी प्राउड कि अभी जो लालो करके जो मूवी आई है, ही क्रॉस 100 करोड़ ऑफ रुपीस. तो ये गुजराती मूवी कहाँ से कहाँ आ गई, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिसर्च बोल सकते हैं आपको, कोलैबोरेशन बोल सकते हैं, ठीक है. तो इस ढंग से उसने अपनी जर्नी की और आज की तारीख में आप गुजराती मूवीज का सिनेरियो देख सकते हो. थैंक यू वेरी मच सर. आप थैंक यू. Now, sir, this is a question for you. How can EDI support MSME in adopting innovation, branding, and digital marketing for the MSMEs? सर बड़ा अच्छा सवाल है. फर्स्ट आई वुड लाइक टू से कि अगर आप याद होगा, एक बड़े फेमस प्रोफेसर हैं स्टीवन कोवी, अब उनकी डेथ होगी. उन्होंने एक किताब लिखी बड़ी फेमस, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. तो अगर आपको याद होगा तो उसमें लास्ट हैबिट है शार्पनिंग द सॉ, राइट. तो शार्पनिंग द सॉ वो होता है, कहता है कि अब उसको घिस जाती है सॉ, तो यू हैव टू मेक इट शार्पर. सो उसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि आज जो आप लोग यहाँ हैं, बिकॉज दैट मीन्स यू आर always continual, there is a continuous learning process you are always saying. So that is something which I am feeling very happy about. And ये मुझे गुजरात में बड़ा अच्छा लगा. मेरा एक स्टूडेंट है सर, उसके वो राजकोट से आता है. तो जब क्लास में पढ़ाई होती है तो उसके दादा उससे पूछते हैं कि तूने आज क्या सीखा, राइट. एंड दे ऑल्सो, इट्स लाइक एक बंदा है, उसके पापा भी पढ़ रहे हैं और साथ में उसके दादा भी पढ़ रहे हैं. तो दैट इज समथिंग विच आई रियली लाइक अबाउट द एनवायरमेंट विच गुजरात हैज. So coming back to how EDI can or any institution can help, I feel कि एक तो MSMEs के लिए हमें मिलके एक co-creation of research एजेंडा बनाना पड़ेगा कि हम करना चाहते क्या हैं. अगर हम मिलके वो बना लेंगे तो बड़ा आसान है. क्लस्टर्स बन गए. मोरबी क्लस्टर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ सब मिलके सीख रहे हैं और अप्लाई भी किए जा रहे हैं. तो मैनी टाइम्स हम compete भी करते हैं मार्केट में डेफिनेटली, लेकिन हम कोलैबोरेट करते हैं. तो जब हम क्लासरूम में होते हैं तो वी आर नॉट competing, वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. सो दैट इज समथिंग दैट हेल्प्स अस इन ग्रोइंग टुगेदर, एंड दैट आई फील दैट इज द रीजन व्हाई गुजरात हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन दिस. अनदर थिंग इज कि जैसे हमें सीखना पड़ेगा सर. वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है और मार्केटिंग, इफ आई लो, इंसिडेंटली आई वर्कड इन लिंटास अर्लियर और वी वर द फर्स्ट वन एट दिल्ली सर. उस समय आईएम ने भी डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया शुरू नहीं किया था. 2010 वी स्टार्टेड टीचिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग. इशू इज कि मार्केटिंग बहुत तेजी से बदल रही है. विद एआई कमिंग तो और भी ज्यादा तेजी से बदल रही है, राइट. तो
अगर तैयार है तो एडीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस है, हम हैं और भी बड़े सारे हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन, तो वो एक क्लिनिक्स हैं उस तरह के आपके लिए तैयार हैं। मतलब वी आर, इफ यू आर रेडी टू लर्न, देयर आर ऑलवेज, वो कहते हैं ना कि इफ स्टूडेंट इज देयर टीचर विल अपीयर, तो when student is ready, teacher comes in, right? And there are a lot of things many people have said, sir ने भी बोला कि स्टूडेंट लेड मार्केट रिसर्च की जा सकती है, फैकल्टी लेड, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन, एंड पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट स्कीम्स। सो आई पर्सनली फील कि देयर इज, इंटेंशंस सबकी ठीक है सर, लेकिन अगर मिलके अगर हम उसको एक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क बना लेंगे तो शायद वहां पर हमें बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड प्रॉब्ली जैसे the associations like AMA, Auto industry associations can play a very large part in it, very large part, because they are already doing a lot of effort in bringing everybody onto the same forum, onto the same platform. So but institutions like us, ADI, if whatever in, chahe wo marketing hai, chahe wo operations hai, wherever the help is required, we can create training programs for everyone. Yes, thank you. थैंक यू सर। मनोज कुमार सर, हम एक जान क्वेश्चन आंसर, ओके। Prashant Bhai has requested me that he has to leave, but let us finish with Manoj ji. या ओके सर, could you share successful examples where MSME, government and academia collaboration resulted in a measurable growth? सर हम लोगों ने ना जितने भी टॉप के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी हैं, सभी में एक जो पॉलिसी मैंने बताया ना आपको, इनक्यूबेशन सेंटर हम लोगों ने लगाए, उनमें से कई सारे बहुत अच्छे डेवलप हुए, कई सारे। आपको एक एग्जांपल, एक छोटा सा एक बंदा एक रिटायर हुआ, तो वो जिस दिन रिटायर हुआ नेक्स्ट डे मेरे पास आया, बोलता है सर ये जो कोटा में लोग ना सुसाइड कर रहे हैं ना, मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं यार ऑल ऑफ सडन एक अलग ही चीज बात कर रहा है, तो कैसे करोगे वो? सर ज्यादातर मैंने देखा लोग ना फैन से लटक के मर रहे हैं, तो फिर मैं सर ऐसा फैन बनाऊंगा कि उस पे जब कोई बंदा लटकेगा ना तो फैन नीचे आ जाएगा, बंदा नहीं मरेगा। अब यार अब हाँ, मैंने उसको पूछा करते क्या हो? ये करता कुछ नहीं जी, कल तक तो जॉब करता था, रिटायर हुआ हूँ, अब कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हम क्या कर सकते हैं बताओ? बस अब बाकी सब आपको ही करना, आइडिया मेरा है। अब मेरे पास दैट टाइम आई वाज हेडिंग वन टेस्टिंग सेंटर इन मुंबई, तो मैंने अपना जो मेटलर्जिस्ट था, एक मैकेनिकल इंजीनियर था, उनको बुलाया, भाई ऐसा करो साहब, जो जो बोले ना वो करो। तो बंदा ने एक स्प्रिंग लेके आया था मेरे पास, साहब ये स्प्रिंग है 20 किलो तक का वेट ये बियर कर लेगी, पंखा इससे ज्यादा भारी होता नहीं है और बंदा 20 किलो से ज्यादा का होता है, ठीक है। अब हम लोगों को वो स्प्रिंग टेस्ट करनी थी और रॉड के अंदर फिट करनी थी। अब देखिए वो बंदे का अभी जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स है उसमें फैन में वो इनकॉर्पोरेट हो गया है। हम लोगों ने टेस्ट किया था, हम लोगों ने बनाया, उसको डेवलप किया। ये छोटी छोटी चीज है। एक बंदा मेरे पास आया कुछ दिन पहले, बोलता है साहब मैं ना ये जो चार्जर होते हैं ना कार चार्ज करने के, ये हर एक कार का अलग अलग अडेप्टर होता है। हाँ बोलो साहब ये जैसे मोबाइल का है ना ऐसा ही प्रॉब्लम है, छोटे पिन बड़े पिन उसकी प्रॉब्लम है। मैं एक ऐसा बनाना चाहता हूँ कोई भी कार हो ना उसमें लग जाए, तो कैसे करोगे? बोलो साहब मैं कुछ जुगाड़ करके लाया हूँ, आपसे टेस्टिंग करवा दो कि वो ये देख लो कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं है। वो बंदा साहब 28-30 दिन तक लगा रहा हमारे यहाँ, आज एक्सपोर्ट कर रहा है वो। बहुत अच्छा। वो और अच्छा बढ़िया एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके लिए पॉलिसी बनाई गई है अब कि वो यूनिवर्सल अडेप्टर होना चाहिए, जैसे मोबाइल में ना ऐसे कार में होना चाहिए। ऐसे मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स बता दूंगा जहां पे बंदा आता है कुछ आइडिया लेके और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस उसकी हेल्प करते हैं और वहां से कहीं भी जा सकता है, क्योंकि इनिशियली उसके पास ना कैपिटल नहीं होती। अभी उस बंदे के पास फैन वाले के पास लैब नहीं थी, ये जो अडेप्टर वाला इसके पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं था। अभी के रिसेंट का एग्जांपल बताऊं, आप जब किसी एयरपोर्ट पे लैंड करते हो ना तो लाइटें लगी रहती हैं बहुत सारी। ये लाइटें इंडिया में नहीं बनती क्योंकि इनको ना एक अप्रूवल लगता है, वो अप्रूवल बाहर से होता है। अभी बताइए हमारे यहाँ के लाइट नहीं बन सकती? खूब बनती हैं, बट क्योंकि उस अप्रूवल का प्रॉब्लम है वो होता है बाहर, वो अमेरिका से करा के लाते हैं, उसमें इतने डॉलर लगते हैं उतने उनका बेचारे का, तो इससे बेहतर वो इम्पोर्ट कर लेते हैं बजाय कि इंडिया में डेवलप करने के लिए। वो हमारे पास आया, दिल्ली का था, आईआईटी का था, वो तो 2-3 कंपनियों में काम किया था, हनीवेल वगैरह में।
तो उसने छोड़ के बोला सर मुझे कुछ कीड़ा है, कुछ करना चाहता हूँ, बस आप टेस्टिंग कर दो, प्रोडक्ट मेरा सही है। हमने कहा ठीक है, आ जा बेटा। तो वो हमारे कई बार तो बेचारा लैब में ही सो जाता था रात को, वो होटल में जाने का टाइम ही नहीं मिलता, उधर ही सो जाता था। बट आज वो मुंबई में, चेन्नई में, दोनों जगह की जो लाइटिंग अभी जो प्रोक्योर हुई है पिछले 3-4 महीने में, वो सारी उसकी है। तो देखिए कुछ नहीं था उस बंदे के पास, एक जुनून था, बाहर से लाइटें लाया था और उसको पता था कि ये जो लाइट बनती कैसे है, सिर्फ उसको टेस्टिंग के था। अब हमारी, क्योंकि हमारी अपनी लैब है बहुत सारी, एनएबीएल एक्रीडेटेड हैं, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, वो भी ऐसा ही था, उसको भी कीड़ा था कि कुछ कर दूंगा सर, मैं चिंता नहीं करो, सैटरडे संडे में आ जाया करूंगा इसके लिए, क्योंकि तो कई बार ना जब आप लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं ना, उनको जुनून होता है ना, तो कुछ निकल आता है वहां से। तो इसलिए जब भी आपके दिमाग में ना कभी कुछ आए, समझ जाना यही सही चीज है। जो रेगुलर वाले होते हैं ना, वो रेगुलर ही काम करते हैं, कुछ अलग जो होता है ना, वहीं से रिजल्ट आता है। थैंक यू सो मच सर। सर ने बहुत इजी कर दिया, यानी अपने दिमाग में कीड़ा आना चाहिए फिर आगे कैसे ले जाना है, यानी बहुत काम सरल हो गया है। पहले जो अपने विचार करते थे कि भाई रिसर्च में क्या होगा, कौन हमारा हैंड होल्डिंग करेगा, नाउ थिंग्स बिकम वेरी इजी। जो वसा साहब जो सारे एंटरप्रेन्योर को कन्वे करना चाहते हैं, तो वो इतनी सारी चीज़ें इजी हो गई है। तो टाइम का थोड़ा कंसर्न है, मैं ऑडियंस से कुछ क्वेश्चन आंसर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी है, तो पहले अपने वो क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर समय रहेगा तो और आगे बढ़ेंगे। तो मैं ऑडियंस में से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। Hello. A very good evening to everybody, and my respectful regards to the panelist and the host. I am actually quite, I can see that I'm the youngest in the room, and I had this inquisitive thought in my mind that you guys have so much experience, and there are so many people sitting, and I'm sure they must be having their own expertise or coming from a varied background. So first thing, how can we collaborate with each other over here, and how can we network? Because it is not possible for me to go and talk to each one of them and connect with them and know what their profile is and how it can fit to my need or my vision. Also, if I am looking for a mentor who can guide me through my journey, because at an initial level I could not get the some of the resources due to any reason. So how do I find my mentor in the first place, and how do I build the right network? Because if I have to collaborate, I have to collaborate with the right people in the first place. जमीन सर आप। To give you answer in one sentence, if there is a will, there is always a way. And of course, my all centers, particularly in, Dr. Jamin Masa AMA MSME Development Center, you register your name and in which area you want to collaborate. And otherwise, I'll also introduce Mayank Bhai. Mr. Mayank Mehta is my executive assistant for all the 3 centers. I can collaborate with you, any entrepreneur, any researchers, any issue you have, and I can make sure that you will get the right answer, right person to collaborate with. Thank you, sir. Respected mentors, good evening. My name is Pitambar Rajput. Actually, I wanted to ask if I'm seeking for the larger amount of funding. So I'm having an idea also. I'm basically printing and packaging technologist, and having experience 10 years of plus experience in the same stream. So, is there any support we can gather from the government also? There is a loan provision. What I have, जो भी मैंने अभी तक पता किया है बेसिकली, तो उसके अलावा भी और भी कुछ जैसे स्कीम्स हैं जो इतनी जैसे 30 करोड़ समथिंग तक की फंडिंग है, तो हम लोग कैटर कर सकते हैं उस चीज़ को। सो स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जहाँ पे
जो आपके फंडिंग के ऊपर बेस्ड है। फंडिंग इन द सेंस आपको बैंक से लोन लेना है, बैंक आपको लोन देती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिलती है। सो आई विल गिव यू कपल ऑफ स्कीम्स, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा जो फ्लैगशिप स्कीम है दैट इज लाइक श्री वाजपेयी बैंकेबल योजना, अंडर विच यू गेट लोन ऑफ अप टू 25 लाख, 25 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो, एंड मिनिमम 20% से लेके मैक्सिमम 40% तक का सब्सिडी आपको मिलता है, विद द कैपिंग ऑफ 3.75 लाख फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी, सोशल कैटेगरीज, एंड फॉर एससी एंड एसटी 5 लाख रुपी। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट इज अप टू 25 लाख देन दिस इज द स्कीम। उससे अगर बड़ा आपका रिक्वायरमेंट है देन अवर आत्मनिर्भर स्कीम इज देयर। वहां पे देयर इज एज सच देयर इज नो लिमिट, लाइक यू गो फॉर 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, and you get for manufacturing sector you get capital subsidy as well as interest subsidy, and if you are in service sector then you are going to get only interest subsidy, no capital subsidy. So based on the requirement of fund you can decide which scheme you should go for, and you can avail loan from the bank and government will give you subsidy to repay the loan. Sir, so loan is the only way to get the No. So loan, you specifically ask for the loan. So there is one. Another is the incubation center. incubation. So you can approach to the incubation center. You can present your idea. There is a committee. They approve your idea. Then initially they provide you all the facilities for infrastructure facilities basically. And once you are at certain stage, then financial aid will also be provided. Okay, thank you. मैं इसमें एक और ऐड कर दूं, ये सारी जो स्कीम्स थी स्टेट गवर्नमेंट की थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की भी किसी तरह की स्कीम है जो केवीआईसी रन करती है, वो है, हाँ, वो पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उसमें भी आपको सेम है, आपको अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के ऑनलाइन, उसमें उसमें आप अपना ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उसमें दे सकते हैं। अगर वो शॉर्ट लिस्ट हुआ, वायबल हुआ, तो उसमें भी सेम जैसे सर बता रहे हैं सब्सिडी कंपोनेंट भी है। और Yes, I am Ashok Bhavsar, Sigma Mech Engineers Private Limited. एक्चुअली इंक्यूबेटर से जो फंडिंग मिलता है उसके लिए बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म है, लेकिन कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि भाई स्टार्टअप को फंडिंग के लिए हेल्प कर सके इंक्यूबेटर से, क्योंकि हम लोगों ने भी कंसल्टेंट रख के इंक्यूबेटर में अप्लाई करवाया हुआ है। हाँ, देखिए काफी बार क्या होता है, दिस इज प्रैक्टिकल थिंग, एंड लेट मी गिव यू वेरी ट्रांसपेरेंट आंसर टू दिस। मेनी टाइम्स वी अवॉइड डूइंग आवरसेल्फ, राइट? ये बहुत सारी बार चीज होती है। एक छोटा सा कुछ भी काम करना है, देन वी फील कि हमें नहीं करना है, दैट माइट बी अ लेंथी प्रोसेस, आई नीड टू गो, आई नीड टू इन्वेस्ट माय टाइम, एंड फॉर दैट वी गो फॉर some or other consultant, right? And then they charge their fees and then they do what you are supposed to do, right? But that is ideally that's not required. अगर आपको खुद को करना है, जैसे मैंने बताया, most of the processes are online, right? हाँ, इंक्यूबेशन ऐसा है कि जहाँ पे आपका फिजिकल इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन इन द सेंस देयर इज अ कमिटी जो आपका आइडिया सुनेगी एंड देन दे विल डिसाइड, एंड दैट कमिटी इज नॉट कंप्राइजिंग ओनली फॉर फ्रॉम गवर्नमेंट। उसमें एकेडमिक से भी लोग होंगे, उसमें एक्सपर्ट्स भी होंगे इंडस्ट्री के, एंड देन दे विल डिसाइड। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कंसल्टेंट ही रखना है। लोग अपनी ईज के लिए, अपनी इजीनेस के लिए दे गो फॉर कंसल्टेंट्स, बट गवर्नमेंट की साइड से हम उसको एनकरेज नहीं करते हैं। गवर्नमेंट को कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, आप आ सकते हो, आप पूछ सकते हो, एंड वट एवर हेल्प गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड दे विल डेफिनेटली डू। थैंक यू। Jai Hind, sir. Sir, I come from the CED, the Center for Entrepreneurship Development. I think it's under the Industries and Mines Department, and I work with the Rajkot region. Sir, what I experience, I don't want to ask any questions, but I experience is that
whenever I have visited the DIC, the district industry centers, so many people just come to those centers and they ask for the some schemes and all the things. And right now the e-rickshaw scheme is there. So what happens? What I have observed that the people just sitting over there, they say there's just one pamphlet is there. You just click on that and just go to the website and you will get all the information. But what happens that the people are coming, they are not that much of the uh, aware, and they are not that much of tech savvy persons, so they cannot do the everything themselves. So I would like to suggest sometimes somewhere that we have some person who can help them on the same test, so they feel the happy and they feel the good things that some person only just explain the things. And one more thing, sir, we do the EDP programs. So in the EDP programs, we cover all the schemes like the MSMEs, bankings, and DIC schemes. All the schemes are covered in the EDP program. It's just for the 12 days program. But what happens after the 46 years, people still not aware about the CED. So what the CED just do for the MSMEs and for the newcomers. So I would like just one thing is that in the PMEGP there is a provision that if you have completed the EDP, then and then you will be eligible to get the funds. So I would like to also suggest that that kind of other provisions are in the same in the DICs, that if you want to apply, if you want a funds, you just go for the EDP programs anywhere from either from MSME, NSIC, and the CED. So they will come to know about exactly about how to run the programs. CED has developed the very good modules for the uh, uh, entrepreneurs existing and for the newcomers. So I would like to visit the CED website, and sir knows the very well. Thank you very much, sir. Anything you would like to add on this? Right. So, My name is Prakash. Go ahead, sir. Prakash. So, for PMEGP, yeah, there is a CET requirement. I mean, entrepreneurship development program. One needs to go. What's the logic behind? The logic is like government is giving very handsome subsidy into that, up to 35% विदाउट एनी कैपिंग. जैसे मैंने आपको श्री वाजपेयी बैंकेबल योजना बताया, सो देर इज अ कैपिंग 3.75 लाख. हियर देर इज नो कैपिंग. 50 लाख का 35% जो आप कैलकुलेटर में कर रहे हो दैट यू विल गेट, प्लस यू विल गेट स्टेट सब्सिडी एज वेल, जो मैंने आत्मनिर्भर में बताया, बिकॉज लाइक दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, सो स्टेट में से भी वो एलिजिबल है. अदरवाइज 2 subsidies from single government you cannot get. From central government से आपको 2 नहीं मिलेगा, state से 2 मिलेगा, but this is central and state, so you get very handsome. मतलब आप पूरा calculation कोई करके जाए तो 50% से भी ज्यादा subsidy उसको मिल जाए, right? So for that and 50 लाख के ऊपर सब्सिडी मिलता है, 1 करोड़ तक का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप लोन ले सकते हो, एंड फॉर सेकंड टाइम आप 3 साल के बाद ले रहे हो, दैट इज लाइक अप टू 1 करोड़. सो क्या है कि वहां पे सब्सिडी कंपोनेंट बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है. सो गवर्नमेंट इतना जब दे रही है, सो गवर्नमेंट फील्स कि वन शुड गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एज वेल, सो दे नो कि आप बिजनेस को भी किस तरह से चला सकते हो, राइट? बट व्हेन वी कम टू डीआईसी स्कीम, वहां पे हम लोग ऐसे पशुपालन जो करते हैं, राइट, गाय भैंस जिसको लानी है, रिक्शा किसी को चलानी है, किसी को टैक्सी चलानी है, हम उनको भी सब्सिडी देते हैं, राइट? तो वो सबके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करना इट्स प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं, बिकॉज उसमें वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टन थिंग्स. तो दैट इज व्हाई योर सजेशन इज गुड. लाइक इफ वन गोज फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग, दैट इज ऑलवेज गुड. और ये हम सबके लिए, जैसे मैं ये तो लोन उसके ऊपर सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट प्रोएक्टिव इतना है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक मानव कल्याण योजना बताया, जहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट किट देते हैं, राइट? जो ठेला लगाते हैं, मशीन लेते हैं, हमने ये साल से कमिश्नर कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज ने उनको भी ऑप्शन दिया है, वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर ट्रेनिंग और नॉट. वो लोग अगर यस करते हैं तो वो चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, वो ठेला लगा रहे, मशीन चला रहे, रिपेयरिंग स्कूटर सर्विसेज वगैरह का कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देन ऑल्सो गवर्नमेंट इज गिविंग देम ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. बट दैट इज ऑप्शनल. वी कैन नॉट मेक इट मैंडेटरी कंसिडरिंग द बेनिफिशियरी ऑडियंस. थोड़ा सा ऐड करो ना, ये जो हम लोगों ने ईडीपी स्कीम इसमें हाँ, ये जो ईडीपी में हमने कंपलसरी की थी ना पीएमईजीपी में,
उसका रीजन ये था कि जब कोई बंदे को हम उतना सारा लोन देंगे, सारी चीजें, वो एनपीए टर्न ना हो, उसको थोड़ा फाइनेंस की भी नॉलेज हो, उसको थोड़ा मार्केटिंग की भी नॉलेज हो, इसके लिए उसको हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ईडीपी। ठीक है, हाँ, तो उस पर इनफैक्ट हम लोग खर्च करते हैं। उसका रीजन वो था। जहां तक आप कंसल्टेंट की बात कर रहे हैं ना, हम लोगों ने कुछ स्कीम्स में कंसल्टेंट इंट्रोड्यूस किए। जैसे हमारी जेड में हम लोगों ने क्यूसीआई को लिया, लीन में हम लोगों ने एनपीसी को लिया, और वो कंसल्टेंट को यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग, वी आर पेइंग देम, वी हाँ, लीन में किया, हाँ सर। तो उसमें हम लोगों ने उनको इनरोल्ड किया, और जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारी जो इमेजिनेशन थी उससे फार बेटर है। तो ये होता है, बट हर जगह। पर अगेन मैं एक चीज फिर भी बोलूंगा, जो एक सर पूछ रहे थे वहां पे, प्लीज कंसल्टेंट्स के थ्रू मत आइए। जब आप हमारे पास आएंगे ना, तो आप शायद हो सकता है पूछने कुछ और आए हो, पर आइडिया आपको कुछ और लगे। बट कुल मिला के जितना आप हमें तंग करेंगे ना, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। ठीक है ना? Thank you, sir. We are running. Yeah, last question, please. I am one of the PP for CED in Scheme 7. Mr. Ramnath sir was there. Yes, sir. I had a long, prolonged discussion with Anjuman as well as Sandeep Sangle sir regarding one of the pilots for the NGOs. NGOs are not embedded in especially entrepreneurship, MSME, anywhere. Why? This is my first question. We are leading NGO and we are Pan India working as a training partner. We are authorized training partner for NSTC and so many sector skill council, even in Gujarat government. But why the trust is not good for NGO in MSME, and we have to bid as a Section 13 company registration or any other profitable venture is required. Is there any option from your side for NGOs betterment, or I hope so? See, so when we talk about NGO, you work for people, right? You must have a lot of people for whose betterment you would be working in some or different sector, right? So there are two ways to see the benefit. One is directly trust getting benefit to enhance their activities, to enhance their reach, and to do work in more aggressive way, or in a larger in a way that they reach to the larger audience. So that is one thing. Another is the people for whom you are working, right? So for each of the people, let's say when we talk about NGO, most of the times you work for people who are at grassroots level, who are not very well equipped with various knowledge, we can say, finance, we can say, and have limited expertise, right? So all your beneficiaries, or for the people whom for whom you are working, all of them are eligible to get benefit from the government. But yes, for trust, because like government has created separate environment, like charity commissionerate and all of that. So because of that, this is what I feel, because like you have met all the senior people, they might have give you more elaborative answers to this thing. But for my understanding, there is separate environment created for trust for NGOs. But yes, your larger audience for whom you are working, all of them are एलिजिबल फॉर आर बेनिफिट्स. एंड आई पर्सनली, मैं बहुत बार बहुत सारे एनजीओस के साथ गया हूँ टू एक्सप्लेन देम ग्राउंड लेवल स्कीम्स. काफी बार ऐसे होता है सर, काफी बार हम लोग ऐसी जगह पे गए, वो बोलते हैं कि हमारा कम्युनिटी के लेडीज है, वो उनको घर से मतलब सोसाइटी से बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो आप घर पे जाके आके सेमिनार करोगे. हम घर पे भी जाके, हमने टेरेस के ऊपर भी उनके सेमिनार किए हुए हैं. टेरेस पे जाके हम जाके करते हैं. बोले कि आपको, बोले हमने क्या बुरा लगेगा, हम यहाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें एयर कंडीशन हॉल में ही सेमिनार करना है, हम ऐसी जगह पे भी, गांव में भी जाके हम लोग करते हैं. बट या फॉर ट्रस्ट, बट योर ऑल बेनिफिशियरीज आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स. Yeah. सर, आपने जो सब बात कही है, इससे एक चीज तो पता चलता है कि इंटेंशन गवर्नमेंट का, बीट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बहुत अच्छा है. लेकिन सर,
जैसे आपने बोला कि आप डायरेक्ट सब एमएसएमई से डील करना चाहते हैं, बीच में कोई नहीं होना चाहिए। तो आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सर, सो हाउ कैन आई कोलैबोरेट विथ यू? बिकॉज सर मेरा एक्सपर्टीज फिनेंस में है। आई हेल्प एमएसएमईज गेट फंडिंग फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन मैं आपसे कैसे कोलैबोरेट कर सकता हूँ? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत अच्छे बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कोई स्कीम होते हैं, लेकिन मेरे पास वो ब्रिज मैं बन सकता हूँ, लेकिन मेरे पास डेटा नहीं होता कि मैं एमएसएमई तक पहुंच सकूं। तो मैं आप लोगों से कैसे कोलैबोरेट करूं? सर भी कुछ ऐड कर पाएंगे इसमें। मैं फॉर सी टू थिंग्स, वन इज लाइक इंडिविजुअली अगर आपको कुछ बेनिफिट लेना है, आप भी एलिजिबल हो हमारी स्कीम के लिए, राइट? आपको आपका ऑफिस सेटअप करना है, आपको आपका कुछ भी इक्विपमेंट्स लाना है, सो यू आर ऑल्सो बेनिफिट, सो दैट इज वन स्मॉल थिंग। नेक्स्ट थिंग जो आप बोल रहे हैं कि आप आपके क्लाइंट्स को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, हम लोग काफी बार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में भी जाके अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। आप उनके लिए सी हमारा हमारा इंटेंशन क्या है, हम लोग जो बोल रहे हैं कि आप मीडिएटर से मत आइए, बिकॉज गवर्नमेंट में जो भी बेनिफिशियरी है उसको गवर्नमेंट का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो 100% पूरा मिलना चाहिए। उसको कहीं पे भी कोई कट कहीं पे भी नहीं होना चाहिए कि 5% उसने कंसल्टेंसी फीस पे किया, 10% किया। आपका जो कंसल्टेंसी, आई एम नॉट सेइंग यू आर चार्जिंग इलीगली, आप लीगली आपका चार्ज कर रहे हो, वो सब करते हैं। आपकी दूसरी सर्विसेज है, जैसे जीएसटी फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आप करते हो, आप लेते हो। बट गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसी है कि जहाँ पे एकदम ग्रास रूट लेवल से लेके टॉप लेवल तक सबको इंक्लूडेड है। सो वहां पे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सीधा बना रखा है, सीधा फैसिलिटेशन, और अभी तो सारा सिंगल विंडो फैसिलिटेशन सेंटर पूरा क्रिएट किया हुआ है कि आपको अलग 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 जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। सो इट्स नॉट लाइक डोंट कंसिडर अस लाइक हम आपका बिजनेस कम कर रहे हैं, बिजनेस खा रहे हैं, वैसा नहीं है। बट जस्ट टू क्रिएट ट्रांसपेरेंसी वी आर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। बाकी what we can say is like for your clients we are always there, we can come down, we can create एक इससे मुझे एक दूसरा स्कीम याद आ रहा है जो गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट का ही एग्रो और फूड के लिए है, पीएमएफएमआई या पीएमएफएमई, राइट? सो वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने रखा हुआ, और आई थिंक ईडीआई कर रहा है। तो वहां पे जो उनके एसोसिएट्स है उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अमाउंट भी मिलता है फॉर एवरी प्रोजेक्ट दे डू, एंड दैट इज ऑफिशियली दे गेट इट। बट फॉर अस मतलब स्कीम टू स्कीम देयर इज डिफरेंस, बट फॉर जो एमएसएमई की स्कीम है या हमारी कमिश्नर कॉटेज रूरल इंडस्ट्रीज की स्कीम है, वहां पे एनीवन कैन नॉट चार्ज एनीथिंग। बाकी फॉर जैसे सर कर रहे हैं तो हम सर को कहाँ मना कर रहे हैं, वो क्रिएट अवेयरनेस कर ही रहे हैं, हम उनको नहीं, हम साथ में बैठ के उनके साथ कर रहे हैं। बट इफ ही स्टार्ट्स चार्जिंग समथिंग देन वी से कि आप सीधे आइए, आप चार्ज मत करिए। हाँ, वो अपना रेपुटेशन के ऊपर सारा कर ही रहे हैं। सर मैं एक बात बात की है कि उनको डीपीआर अगर समझो कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी को बनाना है या फ्यूचर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाना है, तो हम वहाँ वो खुद नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि किसके पास जाना इस टाइप के प्रोजेक्शन के लिए या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। तो उसमें मैं आपसे कैसे कोलैबोरेट कर सकता हूँ ताकि उनका बेनिफिट हो? देखो, मैं आपको ना कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताता हूँ। हमारे पास ना बहुत सारी एमएसएमई का डाटा होता है। आप सारी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हम उद्यम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बट हम वो डाटा शेयर नहीं कर सकते किसी को भी, क्योंकि वहाँ पे नंबर 2 एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताता हूँ बहुत बड़ी। हम लोग जब कोई स्कीम बनाते हैं तो 5 साल के बाद हम उसका इवैल्यूएशन कराते हैं। इवैल्यूएशन में हम कोई सैंपल साइज चूज करते हैं और कुछ जो बेनिफिशियरी होते हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं। वो एक थर्ड पार्टी करती है, वो उनको पूछती है आपने ये बेनिफिट उठाया, आपको कैसा लगा, आपको क्या और चाहिए, आपको सब स्मूथ हुआ, ये हुआ। जब हम उसके पास जाते हैं उसको लेके, सर इन्होंने उठाया, तो वो पूछे ये हमने कब लिया है, तो जिग्नेश भाई को पूछो, क्योंकि वो तो कंसल्टेंट ने किया है। अब वहां पे बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। आप उसको सुबह से शाम तक 15 लोगों के नाम बताएंगे और कम से कम 14 आदमी जो है ना वो जिग्नेश भाई का नाम बताएंगे, और जिग्नेश भाई बोलते हैं अब मैं वो काम छोड़ चुका हूं, वो स्कीम बेकार है, अब मैं दूसरी कर रहा हूं, आप उसमें आ जाओ। तो यू गॉट इट माय पॉइंट। हम लोगों को वो मिलना चाहिए कि हमने जिसको दिया वहां से फीडबैक मिले, हम अपनी स्कीम को इंप्रूव कर सके। एक जो सर आपने एनजीओ की बात की ना, हम लोग पहले एक स्कीम में एनजीओ से कनेक्ट हुआ करते थे, उनको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी देते थे। अभी भी एक एनजीओ का एक दर्पण पोर्टल है,
दर्पण पोर्टल वहां पे, हाँ वहां पे आप सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, आप अलग अलग तरह से उसमें कर सकते हैं। उनको अभी भी हम किसी ना किसी वे में उनसे कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है। बट फैक्ट क्या है, जब आप एमएसएमई या डीआईसी से बात करते हैं, हम लोग जो प्रॉफिट जो बिजनेस कर रहे हैं ना उनके साथ होते हैं। आप फैसिलिटेटर हो, करेक्ट ना? तो फैसिलिटेटर तो उसमें इकोसिस्टम का पार्ट तो है, बट हमारा जो टारगेट है वो इंडस्ट्री है, तो हम इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करना चाह रहे होते हैं, तो हमारा टारगेट ग्रुप थोड़ा डिफरेंट होता है, बट डेफिनेटली यू आर पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। कि सर एमएसएमई जो प्रोपराइटर या पार्टनर या जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पास इतना वेयरविदल होता ही नहीं, वो अपना बिजनेस संभालेगा, वो सब्सिडी के लिए भागेगा, वो फंडिंग के लिए। तो इसीलिए तो मतलब ये कोलैबोरेटिव अप्रोच इसीलिए रखना चाहिए ताकि एमएसएमई अपने बिजनेस पर फोकस कर सके, ना कि ये और सर टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिकली हमें सबको पता है कि वेबसाइट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने ये भी देखा है कि वेबसाइट हमेशा डाउन ही होते हैं जब भी गवर्नमेंट वेबसाइट, जब भी इंपॉर्टेंट डेडलाइंस हो, डेट्स हो, क्योंकि मैं तो डे इन एंड डे आउट ये सब फेस करता हूँ। तो मेरा ये सर और एमएसएमई वाले नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनको आपके साथ डे इन एंड डे आउट काम करना है, लेकिन फ्रैंकली ये बात बता रहा Thank you very much, sir. Now, very quick, sir, please. Yeah. Thank you. I'm sorry, I'm not going to take more time. But, I had a small question. It's working. Hello. Sir, are there any schemes from the central or the state government for working capital and for claiming the CGTMSE? That is question one. And is there a cap on the Atmanirbhar Bharat scheme on the capital investment? So when you talk about working capital, so working capital for the scheme Shri Vajpayee Bankable Yojana, which I mentioned. So for that, working capital does not mean you are going to get hard cash in your account for, let's say, for paying wages, or let's say paying light bill or rent or anything. But for acquiring raw material that you can claim under working capital. So let's say you are running a restaurant, or let's say you are a doctor and you want to get cotton, or for restaurants you want to have some edibles, or so that you can consider, and that is like very well covered. But yes, at the same time, you cannot go for 100% working capital. You need to have at least 10% of fixed capital, and for female it is 5%. So at least 5% or 10% should go to the fixed capital, your machinery or anything else. But yes, rest you can claim, or rest you can avail for the working capital as well. And yeah. No. So I was coming to your Atmanirbhar. So Atmanirbhar, there is, because like this is for MSME. So whatever guideline is been given for the micro, small and medium, so the same will be applicable for that as well. And why I'm not giving much into that details, because like we are about to revise the policy, because like government is Atmanirbhar policy is already due for the revision. So next is like reflection of the new policies and new limits as well. सीजीटीएमएससी का 10 करोड़ की लिमिट अभी बढ़ा दिया, उसकी सीजीटीएमएससी में क्या इशू है बताओ आप मुझे। सर उसमें कुछ कैप होता है क्या? हाँ 10 करोड़, 10 crores. up to 10 CR you can take. Up to 10 crores. And sir, as you all say that the government, the MSME sector is being provided with loans via banks or financial institutions. What happens is when we go to the financial institution, they need collaterals. Add? Collateral securities. Oh, they yeah, ask okay, for. okay. Okay, as far as I have, I had learned about this earlier, that without collateral, the banks will not give any kind of, loans. No. It is not true. It is true, because I myself have taken one. In CGTMSC, they are giving you the loan without collateral. No, they have taken collaterals from us. I'm not talking about CGTMSC. I'm talking about. See, I'll answer you. I'll clarify the thing. Yes. See, banks are under RBI, Reserve Bank of India.
as per RBI guidelines, this is for all, and even I was not knowing before a couple of years. If you are taking any loan, business loan up to 10 lakh rupee, then bank cannot, I repeat, cannot take any collateral, right? Even we meet regularly, like under the chairmanship of Honorable Collector and District Magistrate, every 3 months, quarterly, there is a bankers meeting where RBI representative is also there. In last to last meeting, he confirmed like we found 2 banks who are taking collateral in the loan which was less than 10 lakh, and then they fined them with both of them combinedly around 65 to 66 lakh rupees. This was the amount RBI put a fine to them. And about 10 lakh, then it depends on the bank. That is the bank's purview whether to go for the collateral or not. So government cannot force directly, because like that is as per the guideline of Reserve Bank of India. But yeah, for 10 lakh rupee, that is absolutely crystal clear. If you are facing any kind of issue, then every district has lead district bank and lead district bank manager. As of now in Ahmedabad, SBI is the lead bank, and they sit at Bhadra, Lal Darwaja, near Lal Darwaja. You can approach them and you can tell this thing. You mentioned about the technological benefits from the government. Now, what if I have to import some machinery from abroad, which is helping in the energy sector? Sir, you please contact him. He will be available there. Now, there are 2 takeaways for this session. One is the government and the academia, university, colleges are very proactive and very cooperative. The second thing is, if you have any question regarding this MSME, here in AMA, Dr. Jamin Vasa AMA Development Center, you can contact anytime for your further queries. So I will request Dr. Jamin Vasa sir for vote of thanks. Thank you. Sorry, sir. Very interesting session. And tell me, I'm really happy to say, Taratanji, you made it more even interesting by wonderful questions to our wonderful experts. And I'm really thankful to all experts giving a very much inputs side, very important ideas and questions, answers to all questions. And I'm very happy to all my audience. They are very intelligently asked the questions. Patiently, they listen to us. And I think I would rather Dr. Jamin Vasa AMA MSME Development Center is meant for MSME and startup. Every alternative month, we are doing the SME growth series on the various subjects. I would always request you to attend. You will be able to come across many important experts at a one place, and also to answer you and to all the entrepreneurs. As I said, I have 3 centers. One is at Gujarat University. Mr. Mayank Mehta is there. You can always contact him. He was ex-CED person, very intelligent, and he has all the schemes by heart and can answer. Secondly, as a research at NIRMA, and AMA is our big center. So whoever wants any information can contact AMA. They will immediately send your points and questions. This is what I told to that lady also. This is what success of my efforts. You ask the questions, you ask for the help, and we are always there to make sure you get not only the answers, you get the solutions also for your things. So once again, thank you, my dear experts, and to the audience, and good night, sir. Thank you.